नेशनल इनकम, जितना सिंपल नाम उतना ही कॉम्प्लिकेटेड यूनिट। इसके सम सॉल्व करने में पेजेस लग जाते हैं और दिमाग का दही हो जाता है। सो आज के सेशन का टारगेट रहेगा इन सिंपलेस्ट पॉसिबल वे पूरे यूनिट को वन शॉट में कवर करना। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द कॉमर्स एलिमेंट। Proceeding the session first with the circular flow of income in two-sector economy. Generally, this question comes as a 3 or a 4 marker straightforward question. Now, as such, economy में 4 sectors होता है: household sector, producer sector, government sector, and rest of the world. But for the sake of understanding this model, we are just studying economy with 2 sectors, that is household and the producer sector. Now household और producer sector के बीच में always money flow and the real flow keeps on going. Money flow, as the name suggests, the flow in terms of money, and real flow is nothing but flow in terms of goods and services. So household sectors producer sectors को FOPs provide करता है, factors of production, land, labor, capital and entrepreneur. These are known as factor services because services है, of course ये जो black में flow हो रहा है from household to producer is a real flow. Now producers इन FOPs का use करके goods and services का production करता है और वो produce goods and services from producer flows back to household sector. Because again ये black में जो flow हो रहा है that is a flow of final goods and services. It is also a real flow. Now householders जो भी factor services producer को provide करेंगे, free में थोड़ी करेंगे, उसके बदले में producer उनको factor payments करेगा, green वाला, land को rent देगा, laborers को wages, capital को interest और entrepreneur खुद अपने लिए profit रखेगा. Like that, the producer will make factor payments to the householder because these factor payments are in terms of rupees. यहाँ से यहाँ जो green में हो रहा है that is money flow. अब इनको rupees तो मिल गए, अब householder rupees का क्या करेंगे? They will spend it as final consumption expenditure on these goods and services. जो भी goods and services बने उनको consume करने के लिए they'll spend the amount that they have earned from producers. And like that again from householders to producers money flow होता है in terms of final consumption expenditure. Now in economy any model any theory works based on certain assumptions. So इस model के assumptions है there are only 2 sectors in the economy, household and producer sector. There is no government sector because दो ही sector है तो हम assume करते हैं कि government sector नहीं है. Because दो ही sector है हम अगला assumption करते हैं कि economy is a closed economy. Economy में rest of the world के साथ कोई transaction नहीं हो रहा है. And the last assumption is no savings by household sector. Household sector producer से जो भी factor payments लेते हैं वो सारा का सारा फैक्टर पेमेंट का अमाउंट दे स्पेंड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज एज फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सो इट इज सो इजी टू स्कोर 3 और 4 मार्क्स फ्रॉम दिस मॉडल. डोंट वरी अबाउट स्क्रीनशॉट, लास्ट में ले लेना, फिलहाल गो विद द फ्लो. मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. Goods can be classified as final and intermediate goods. They can be classified as consumer and capital goods also. Final goods किसे बोलेंगे? Those goods that have crossed the boundary line of production. Again final goods किसे बोलेंगे? That which are ready to be used by final users. अब final users किसे बोलेंगे? तो final user can be consumer also. Final user can be producer also. तो अगर इन फाइनल गुड्स का फाइनल यूजर कंज्यूमर है तो द गुड्स विल बी नोन एज फाइनल कंज्यूमर गुड्स. बट अगर इन फाइनल गुड्स का यूजर प्रोड्यूसर है देन द गुड्स विल बी नोन एज फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. फाइनल कंज्यूमर गुड्स पे जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इनकर करता है दैट एक्सपेंडिचर इज नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर.
और प्रोड्यूसर जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड पे एक्सपेंडिचर इनकर करता है दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इकोनॉमी में जो भी गुड्स ये कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी करते हैं दोज गुड्स आर टर्म्ड एज फाइनल गुड्स। मूविंग ऑन टू इंटरमीडिएट गुड्स, दे आर दोज गुड्स which have not crossed the boundary of production. Again, they are those goods which are not ready to be used by final users. क्यों ready नहीं है? Because some value addition is still left back. Again, intermediate goods मतलब those goods which are used in production in the same year. एक ही साल के टाइम स्पैन में जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो जाता है those goods are intermediate goods. Again, they are those goods which are produced by one firm and used as raw material by the other. मेरे फर्म ने प्रोड्यूस करके आपको दे दिए पर आपने वो गुड्स एज रॉ मटेरियल यूज किए, then those goods are intermediate goods. And last but not the least, the goods that are purchased for resale purpose and not for consumption purpose, then those goods are also known as intermediate goods. So जो भी goods ये characteristics carry करते हैं they are intermediate goods. If you want detailed explanation of these goods and which kind of questions are asked from this, then I am giving you the link in the description box. आप जाके पूरा detailed video देख सकते हो. Moving on to consumer goods and capital goods. Consumer goods are those goods which carry these characteristics. The first one is they are the goods that directly satisfy human wants. Directly हमारे want को satisfy करते हैं. Those goods are consumer goods. The second one is they are purchased by households. And the consumer goods can be of 4 different types. Either the consumer good will be durable, or it will be semi-durable, or it will be non-durable, and even services are categorized as consumer goods if consumers are directly using those services for satisfying their human wants. Moving on to the capital goods. Those goods which carries these characteristics will be capital goods. The first is they are the fixed assets of the producer. The second one, because fixed asset, they are repeatedly used in production process. The third one, they are high valued goods. And the final one, these capital goods are subject to depreciation because आप repeatedly उसको use करोगे obviously उनकी value depreciate होगी. So those goods which carry these characteristics are capital goods. Now you may have a tricky 3-marker question in an exam that all capital goods are producer goods but all producer goods are not capital goods. Do you agree with the statement? And justify your answer. So yes, I do agree with the statement that all capital goods are producer goods. The goods which carry all these characteristics are capital goods and all these characteristic वाले capital goods are producer goods. But सारे जो goods producer goods होते हैं वो capital goods नहीं होते. For example, machine is a producer good. On the other hand, a cloth for a textile manufacturer is also a producer good. Machine ये सारे characteristics carry करता है. So machine producer good भी हुआ, machine capital good भी हुआ. But cloth producer use कर रहा है, so producer good तो हुआ. But cloth is not carrying all these characteristics and thus cloth capital good नहीं हुआ. So you need to agree for this statement. And while justifying, you can use this example as well. Now you can take the screenshot. Moving on further with the unit. The name of the unit is National Income and Related Aggregates. Related aggregates पे पहुंचने के लिए this circle works as अलादीन का जिन. क्यों? Because जिन को आप जो भी बोलोगे जिन आपको दिलाएगा. सेम वे आप नेशनल इनकम के जिस भी एग्रीगेट पे अराइव करना चाहते हो ये सर्कल आपको वो एग्रीगेट पे अराइव करवाएगा. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. फ्रॉम जीडीपी इफ यू वांट टू अराइव एट एनडीपी, फ्रॉम इनकम्स
ग्रॉस कंसेप्ट इफ यू वांट टू अराइव एट इनकम्स नेट कंसेप्ट, डेप्रीसिएशन को माइनस कर दो. Same way from G and P, again the gross concept of income, if you want to arrive at N and P, the net concept of income, depreciation को minus कर दो. अगर आपको GDP from domestic concept of income, you want to arrive at G and P to the national concept of income, NFIA को plus कर दो. Same way NDP from domestic concept if you want to arrive at national concept, NFIA को plus कर दो. Mark the arrows that G में से N पे arrive करना है, gross में से net पे depreciation minus करोगे. gross में से net पे arrive करना है, depreciation again minus करोगे. But what if net पे से gross पे arrive करना है, तो आप उल्टा जाओगे तो डेप्रीसिएशन ऐड कर दोगे. नेट कंसेप्ट में से अगर ग्रॉस कंसेप्ट में जाना है, यू विल बी एडिंग डेप्रीसिएशन. इनकम के नेशनल कंसेप्ट से डोमेस्टिक पे जाना है, यहाँ पे भी नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, तो आप NFIA को माइनस कर दोगे एंड यू विल बी एबल टू अराइव एट एनी ऑफ द एग्रीगेट. नाउ the aggregates can be arrived at FC, factor cost, or the aggregates can be at MP also. So अगर आपको FC, factor cost से market price में आना है, तो आप NIT को add करोगे. What is this NIT? NIT is net indirect taxes. Net indirect taxes बोले तो it is nothing but indirect taxes minus subsidy. And like this, 1, 2, 3, 4 into 2, 8 aggregates पे arrive करने के लिए this circle will be extremely helpful. Now national income को calculate करने के लिए there are 3 methods. The first one is value added method, which is also known as product method, industrial origin method, or net output method as well. नेशनल इनकम के डिफरेंट मेथड से जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, इन एग्रीगेट्स में से हम डिफरेंट एग्रीगेट्स पे अराइव करते हैं. सेम वे अगर हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, इनिशियली वी विल बी अराइविंग एट GDP MP. GDP MP पे अराइव करने के लिए द फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक बोले तो इट इज नथिंग बट क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक एंड प्लस द गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन. 1 + 2 + 3 थिंग्स को ऐड करो एंड यू विल अराइव एट वैल्यू ऑफ आउटपुट. इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे मिलेगा? It is value of non-factor incomes. Factor incomes we saw that it is rent, wages, interest and profit. उनके सिवा एज अ प्रोड्यूसर अगर आप किसी को कुछ पे करते हो, उनके सिवा कोई एक्सपेंडिचर इनकर करते हो, then that expenditure becomes your intermediate consumption. I hope the formula is clear. Now let's see how to use this formula in a sum. The question says that you are supposed to calculate NI, that is national income. Now one more thing, when they say calculate NI, NI is nothing but NNP at FC. So NI को calculate करो, मतलब out of all these aggregates you are supposed to arrive at NNP and that too at factor cost. So let's see how to crack the sum. Total sales, purchase of raw material, closing stock, opening stock, expenditure on power, production for self-consumption, indirect taxes, NFIA, subsidies and depreciation. Now ये सारी information का use करके you are supposed to arrive at NNP FC. But we know that value added method से first of all तो we will be able to arrive at GDP MP. GDP MP पे अराइव करने के लिए you need value of output. So we will write value of output minus IC. वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए ये 3 में से जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी है
उनके अमाउंट्स लिखोगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट पे कैसे अराइव करोगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज किए हुए गुड्स माइनस आईसी। आईसी बोले तो एफओपीज के सिवा जो आपने पेमेंट करी, एफओपीज के सिवा हमने क्या एक्सपेंडिचर इनकर करके पेमेंट करा? वन इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड द अदर वन इज expenditure on power. So these two becomes your IC. So raw material plus power. Put the amounts. Sales given is 2000 plus stock is 210 minus 350. 210 minus 350 प्लस गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन 240। इतना करोगे तो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट मिलेगा माइनस आईसी। रॉ मटेरियल पे क्या एक्सपेंस इनकर किया? 600 रुपीज। सो 600 प्लस पावर पे क्या एक्सपेंडिचर इनकर किया? 100 रुपीज। सो 100 इट इज इक्वल्स टू 2000 माइनस 140 प्लस 240 माइनस 700। अगर हम ब्रैकेट्स को ओपन करें 2000 माइनस 140 प्लस 240 माइनस 700 इट विल बी 1400। आपको इससे जीडीपी एमपी मिला, बट आवर स्टोरी डजंट एंड्स ओवर हियर। एज ऑफ द क्वेश्चन वी वांट एनएनपी एफसी। सो जीडीपी पे से आपको एनडीपी एंड देन एनएनपी पे आना है। वो भी आप एमपी वर्जन पे अराइव करोगे बिकॉज दिस इज एमपी। देन एमपी से आपको एफसी पे अराइव करना है। आप क्या करोगे? इफ यू हैव दिस सर्कल विथ यू देन यू कैन डायरेक्टली राइट एनएनपी एफसी इज इक्वल्स टू, आपके पास चालू करने के लिए क्या है? जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी में से अगर आप डेप्रीसिएशन को माइनस करोगे, माइनस डेप्रीसिएशन, तो यू विल अराइव एट एनडीपी एमपी। एनडीपी एमपी में अगर आप एनएफआईए को प्लस करोगे, यू विल अराइव एट एनएनपी एमपी। हमें एमपी पे से एफसी पे जाना है तो हमें एनआईटीज को माइनस करना पड़ेगा। सो माइनस एनआईटी एंड देन यू विल बी एबल टू अराइव एट एनएनपी एफसी। जीडीपी एमपी हमको मिला 1400 माइनस डेप्रीसिएशन गिवन इज 100 रुपीज प्लस एनएफआईए इज 50 रुपीज माइनस एनआईटी बोले तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स आपको दिया है 140 रुपीज माइनस सब्सिडीज इज, सो हमने ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट ऑन कर ली। लेट्स सॉर्ट देम आउट। 1400 माइनस 100 इट इज 1300 प्लस 50। 1350 minus 140 minus 80 it is 60 and it will be 1290 rupees will be your NNPFC. Like this you will be able to arrive at any aggregate using this Aladdin ka gin. I hope this is clear to you. Now you can take the screenshot if you wish. Moving on to the second method of calculating national income, that is income method, distributed share method or the factor payment method. Now when we try to calculate national income using income method, you will be getting the variant that is NDPFC. So to arrive at NDPFC, you have three things in the formula: compensation of employees plus operating surplus plus mixed income. If you add these three, you will arrive at NDPFC. Once you arrive at NDP ka FC version, then you can reach to any aggregate with the help of this Aladdin ka gin. So let's see what these three are. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, एज एन एम्प्लॉय आपको जो भी कंपनसेशन मिलता है, आपको जो भी आपके वर्क के बदले में रिटर्न मिलता है,
that is included in the first component. It can be in form of wages or salary. It can be in form of payment in kind. अपार्ट फ्रॉम वेजेस एंड सैलरी मे बी आपका एम्प्लॉयर आपको क्वार्टर्स दे रहा है, आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज दे रहा है. सो दीज ऑल थिंग्स आर पेमेंट इन काइंड. देन यू कैन हैव पेंशन ऑन रिटायरमेंट. व्हेन यू आर गेटिंग रिटायर्ड आपको आपके फर्म से पेंशन मिल रहा है. एंड डोंट कंफ्यूज दिस विथ ओल्ड एज पेंशन. दे आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स. द नेक्स्ट इज employers contribution to social security scheme, that is SSS. Take care, it is employers contribution, not employees contribution. अगर आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे पीएफ के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है या इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, then that will be also a part of COE. The second factor is operating surplus or OS. What all things will be included? It will include इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. अगर आप कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हो, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, तो व्हाट ऑल काइंड्स ऑफ इनकम यू विल हैव? यू कैन हैव रेंटल इनकम, यू कैन हैव रॉयल्टी की इनकम, यू कैन हैव इंटरेस्ट की इनकम, एंड यू कैन हैव प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ योर इनकम. नाउ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स कैन बी बाइफिकेटेड इनटू थ्री थिंग्स. ईदर इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, or it can be in form of corporate tax, or it can be in form of undistributed profit. Let's crack the sum using this method. The question is asking you to calculate NI, that is NNPFC. You have been given with COE, rent, profit, dividend, interest, MI, net factor income to abroad, net exports, net indirect taxes, and depreciation. We know that all these items are from income method of national income. So we will be starting with NDPFC first. So NDPFC is nothing but COE plus operating surplus plus mixed income. COE directly it is given 2000 plus ऑपरेटिंग सरप्लस का रेंट भी आपको दिया है, प्रॉफिट भी दिया है, डिविडेंड भी दिया है, इंटरेस्ट भी दिया है. सो वी हैव रेंट, वी हैव इंटरेस्ट, वी हैव प्रॉफिट, वी हैव डिविडेंड. नाउ दिस डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट ओनली. सो बिकॉज हम प्रॉफिट अ होलसम फिगर को ले रहे हैं, तो हम उसका पार्ट डिविडेंड उसको इग्नोर मारेंगे. समटाइम्स टू कंफ्यूज यू दे गिव बोथ. बट अगर प्रॉफिट होलसम फिगर दिया है और इनमें से कोई फिगर दिया है तो यू जस्ट इग्नोर इट. सो COE वी हैव रेंट ऑफ ₹400, प्रॉफिट ऑफ 9 एंड इंटरेस्ट ऑफ 500 प्लस MI it is mixed income directly 7000 given. So if you open the bracket it will be 2000 plus 1800 plus 7000. So it will be ₹10,800. NDPFC मिला. We are supposed to arrive at NNPFC. So NNPFC is equals to, आप नेशनल इनकम के इस वाले एग्रीगेट पे हो NDP पे एंड यू आर सपोज टू अराइव एट NNP. आपको NFIA ऐड करना होगा, बट दिस NFIA इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड आपको यहाँ पे दिया है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. आपके इकोनॉमी से अब्रॉड में इनकम जा रही है. सो NNPFC वी नो द फॉर्मूला NDPFC plus NFIA. NDPFC just now we calculated it is 10,800 plus. Now instead of net factor income from abroad you have net factor income to abroad. आपसे जो abroad जा रही है, मतलब you have to take it as a negative figure. आपको इनकम हो नहीं रही है, आप किसी और के टुवर्ड्स इनकम का फ्लो कर रहे हो. सो 50 will be taken as a negative figure and your answer will be 10,750
50 रुपीज। अगर आपको यूनिट्स इन करोड़ या इन लैक्स दिए है तो यू विल एड इट अप। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू विश। Moving on to the last method of calculating national income, that is expenditure method, also known as consumption and investment method, as well as income disposable method. If expenditure method use करके national income calculate करेंगे तो हम GDP MP पे arrive करेंगे। Then आपको जो भी aggregate पूछा है आप ये अलादीन के जिनकी हेल्प से वो aggregate पे arrive कर सकते हैं। तो टू अराइव एट जीडीपी एमपी आपको 4 थिंग्स को प्लस करना होगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर PFCE, इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय इंडिविजुअल्स, हाउसहोल्ड्स एंड नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। The second component is government final consumption expenditure GFCE, that is expenditure by government on goods and services. The third one is investment expenditure I. It is expenditure on purchase of final goods and services by producer which are used in production process. Now this I can be bifurcated into 2 I's. Either it can be fixed investment or it can be inventory investment. Fixed investment में इन सारी चीजों को हम कंसीडर करेंगे। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड्स, लाइक जो भी हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इनका करता है ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ से सपोज देयर हाउसेस, इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट एंड पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट चेंज इन स्टॉक, एंड वी नो दैट चेंज इन स्टॉक इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. Now sometimes instead of investment expenditure they give GDCF, that is gross domestic capital formation. So gross domestic capital formation is nothing but change in stock, this wala, and GDFCF, gross domestic fixed capital formation, which is nothing but fixed investment only. Now sometimes instead of GDCF they may give NDCF also. We know that from gross concept, if you are supposed to arrive at net concept, depreciation is deducted. और अगर net concept से gross पे arrive करना है तो we add depreciation. So GDCF पे arrive करने के लिए अगर आपको NDCF दिया है तो फिर उसमें आप depreciation को add करोगे and you will arrive at GDCF, which you can replace as investment expenditure. Formula पूरा थोड़ा भारी भरकम लग रहा है, but sums में generally the things will be given in a straightforward manner. Let's quickly crack the sum. The question says that calculate GDP at MP, and you have been given with gross domestic fixed investment, increase in inventory, government consumption expenditure, exports of goods and services, imports of goods and services, and private final consumption expenditure. ये सारी चीजों के बेसिस पे you will be able to arrive GDP MP, and हमको क्वेश्चन में भी GDP MP कैलकुलेट करने को बोला है. GDP MP is equals to starting with private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus GDCF, gross domestic capital formation, plus X minus M, that is net exports. Starting with PFCF, directly आपको दिया है 9,950. Government final consumption expenditure, again directly it is given 1,250 plus GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, जबकि आपको दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज इन इन्वेंट्री बोथ. सो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज चेंज इन इन्वेंट्री प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. सो इन दोनों को ऐड करेंगे, यू हैव gross domestic fixed investment 1,500 plus change in inventory is increased by 1,250 plus X minus M.
exports is 850 and your imports are 1050. If we open the brackets, it will be 9950 plus 1250 plus 2750 minus 200. 13,750 rupees, whatever in lakhs, crores, whatever is given. So I hope even this is clear to you. In the next frame, we will be going with precautions to be taken care while calculating national income using all of these three methods. And generally, it is a favorite question of an examiner to ask in exam. Filal, you can take the screenshot. And finally, moving on to the last frame of this Bari Barkam unit. Last but not the least, we will be discussing precautions to be taken while calculating national income using all three methods. And generally, any of this is asked majority of times as a 3 or a 4 marker question. So it is a very straightforward question to gain 3 or 4 mark. जो भी कुछ रेड मार्कर से क्रॉसेस किए हैं, these items are not to be included while calculating national income. And जो भी green marker से ticks किए हैं, those items are to be included while calculating national income. Starting with value added method, sale or purchase of second hand good is not to be included. Commission on sale or purchase of second hand good is supposed to be included. सेल या परचेज खुद नहीं लेना, बट अगर उस पर कमीशन की बात की है, देन कमीशन इज टू बी कंसीडर्ड. Then value of intermediate goods is not to be taken into account and imputed rent is to be taken into account while calculating national income using value added method. Moving on to income method, transfer incomes like one way transfer होती है, like old age pension, unemployment allowances, gifts by employer, compensation to injured worker. These are all examples of transfer incomes, and these transfer incomes are not to be considered while calculating national income. Income tax not to be considered. Income from illegal activities, of course, not to be considered. Income from lottery not to be considered. Interest paid by householders on maybe car or houses loan या loan taken from friend is not to be considered, but you are supposed to consider imputed rent as well as commission on sale or purchase of second hand goods. Lastly, expenditure method. Final expenditure on goods and services is to be considered, but intermediate expenditure on goods and services is not to be considered. Then expenditure on sale or purchase of second hand good, of course, not to be considered. Expenditure on shares and bonds, not to be considered. Transfer payments, not to be considered, but imputed rent, like every time it is considered, and value of self-used own produced goods is to be considered. So very easy way and very less time consuming 3 marker question. Moving on to again another most favorite question of examiners, the difference between stock and flow. Again, this is very important as a 3 or a 4 marker question. Stock is quantity measured at a particular point of time, whereas your flow is quantity measured over a particular period of time. आज के दिन में कितनी क्वांटिटी है, देन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट स्टॉक कंसेप्ट. पूरे वीक में कितनी क्वांटिटी थी ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, देन आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लो कंसेप्ट. It has no time dimension, whereas flow has time dimension. Like you can measure the flow per day, per month, per annum, and so on. It is a static concept, constant concept है, change नहीं आता. Whereas flow is a dynamic concept, it goes on changing.
Finally, you can take the example of bank balance as on 31st March 25. वही particular day को कितनी bank balance थी? If you consider it, then that's a stock concept. And bank balance during 25-26 year वाला time dimension वाला concept लिया. And thus this is an example of flow. And finally, the last topic is GNP deflator. Many times as a one marker MCQ, you will be asked to calculate the value of GNP deflator. So it's a very simple formula, nominal GNP upon real GNP into 100. जो भी वैल्यू आएगी that is your GNP deflator. ये GNP deflator आखिर होता क्या है? It is nothing but it is a statistical tool to measure the average level of prices of all goods and services that makes up the value of GNP. GNP की वैल्यू जिनसे बनती है वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज का एवरेज प्राइस लेवल मेजर करने के लिए जो भी स्टैटिस्टिकल टूल है, दैट स्टैटिस्टिकल टूल इज नोन एज GNP deflator. And I hope everything that we discussed in this one short session is very much clear to you. In case if you want detailed explanation on any of the topic, I'll be placing the links in the description box जिसमें हर एक topic individually and detail में discuss किया है. You can take the screenshot now. You can always ping me in the comment section for your doubts, queries and questions. Until the next session, stay tuned and goodbye.